सो गाइज नमस्ते एंड वेलकम टू ट्रैवलिंग चेरी। लेके चलेंगे शहर में, आपको कैथीड्रल दिखाएंगे। तो गाइज आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सुंदर कैथीड्रल है, तो बहुत ही सुंदर आर्ट है और इतना प्यारा, इतना बड़े साइज़ का, इतना पुराना 500-600 साल पुराना आर्किटेक्चर। क्या सुंदर, दिल खुश हो गया देखकर। तो गाइज यहाँ पे हमें मिलेंगे बाकी लोग, देखते हैं कहाँ पे हैं वो। पिता सैल्यू सैल्यू triangle. Silver triangle. Oh. Hey, dus, hey, spiral, no. I'm sorry. So, I hope guys आपको पसंद आया कैथीड्रल। और अब हम आपको लेके चलते हैं वो स्क्वायर में, जहाँ पे मैं उसका स्टैचू है, जॉन d'Arc। तो ये रही जॉन, जो कि अपने घोड़े पे सवार है और हाथ में तलवार लिए तैयार है दुश्मनों का सामना करने के लिए। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम आपको लेके आएंगे जॉन d'Arc के घर पे। यही है वो सुंदर, पुराना और ऐतिहासिक घर जहाँ पे जॉन d'Arc रुकी थी, जो कि एक्चुअली वैसे अब एक म्यूज़ियम है, पर अभी फ़िलहाल ये पब्लिक के लिए बंद है, तो हम अंदर नहीं जा सकते और आपको दिखा नहीं सकते। तो यहीं पे रही थी जॉन d'Arc, और जिस की वजह से पूरा इतिहास चेंज हुआ था फ्रांस का और इंग्लैंड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है फ्रेंच हिस्ट्री में, और वो हीरोइन मानी जाती है, लड़की एक तरह से बहुत रोल मॉडल मानी जाती है। तो गाइस हेलो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कुछ लोगों से मिला कल रात को, और उसमें से एक दोस्त ने मुझे किसी के घर पे बुलाया है जहाँ पार्टी है आज रात को, और मैं उसको नहीं जानता। एक मेरी कुलीग है जो उसका आगे दोस्त है, उसका भी आगे दोस्त है, तो उसके वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या प्लान है आज शाम का, क्या पार्टी होने वाली है। मुझे पता नहीं ज़्यादा कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या प्लान है। हमने कुछ बियर्स वगैरह ले रही हैं, गाड़ी में पड़ी हैं, और उसके बाद उनके घर जा रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज। सैल्यू देवी, हाउ आर यू? कम सवा सवा alors. So guys, this is Deborah. I call you Debbie. You can call me Debbie. So this is Debbie. I met Debbie in the house of another friend last night, because we were drinking some beers and talking, and then Debbie was speaking a lot of beers, and Debbie was speaking some English, and because other people were not speaking in English, yes, but it's really good enough, like, so I was able to have a conversation with her. So very interesting, Debbie. And then Debbie is here. We are here at the party. Okay, so Debbie said that this is like an association, like a you know, fun. yeah, for fun, and then people meet and then have parties. And Debbie's new to the association,
So Debbie had one party before and she really liked it. I'm sure that's why she's here again. And then that's why I am here also. Thank you to Madame Debbie. Thank you, Thibaut. Et Agathe. Oh, Agathe, oui. So Yeah, this is the Agathe. connection. That's how we met. So let's go with Debbie, and then we will show you how the party looks like. Allez, Yeah. allez. Are garden. Very cool. अरे वाह भाई वाह भाई वाह वाह. तो हम पहुंच गए हैं, तो अभी ढूंढते हैं कि हमारा दोस्त कहाँ पे है. Salut, salut. Hello, how are you doing? I'm fine, really fine. Very My life fine? is really good. Are you high? I'm a butterfly. Butterfly. A fucking butterfly. You go. I have a lot of respect in life and in flower. Oh, this is cool. Nice, man. Nice to meet you. Namaste. Namaste. Salut, Julien. Hey, my friend. Salut. So, welcome to my home. So we have Julien here, Yeah, so I'm the host of the party. He's the I'm host also the Lord of the Kingdom. the So Lord of the Kingdom. Yes, because he. So guys, namaste, and then we found the host of the party. He's Julien, and then I don't know Julien directly because I never met him before. But I had a friend of a friend of a friend who bring me to the party, and we find out that this is Julien's party, and Julien has been to India 2 times, and he knows a lot about India. And then we just were talking, and Julien was so welcoming, so happy. I love this guy. I love this guy already. So Julien, tell me about yourself and about the party and about the Yeah. group. So namaste, my friend. So right here is my house, and this is kind of French party that you can have if you come to visit me. Because here, my friends, we do have a brotherhood. I'm the Lord of the Brotherhoods. Lord of the And Brotherhood, You yes. know, my friend, we call the kingdom. The Here, kingdom, yes. This is the fucking kingdom. Sorry for the bad words. But my friends, cool. here I always love meeting Indian people because you guys are very warm in the Oh, heart, wait. in the soul. Thank you, thank So you. that's why I like to enjoy party with you guys. I've been to your country, and I would like you to come in my own country very Yes. soon. Feel free to join me, tell him, and then we're gonna Julia is arrange. giving an open invitation to everyone, but I'm so Yeah. happy to meet him. Keep on enjoying the party, keep on giving you updates. Shukriya. We will say hello to Shukriya. some people, and Julia is happy, and then House of Julia. We will see how it goes. Yeah. Yes, Julia? Fuck yeah, man. Yes, Fuck yes, yeah. namaste. Guys, namaste. We met another of my very, very cool friends. She's a really cool girl wearing a bindi. Look here. Look here. The girl is wearing a bindi because some people met her in Indonesia and gave her bindi. What's her name again? Delphine. Delphine. So her name is Delphine, and It's Delphine it's like dolphin in English. in English. So, and what do you do, For Delphine? living. Yes. I'm an osteopath. Oh, she is an osteopath. So osteopath in France are the people who help you with your points and when you have a pain at the back, right? Yeah. Yes, back and But it's then. not only the back, it's like the stomach. Okay. It's, every pain And- you and have on your body. and on your body. Okay, interesting. Good to know. Nice to meet you, Delphine. Delphine? Delphine. No, Delphine. Delphine. So Delphine, here it is, and then we'll hope to keep meeting Delphine in this party because Delphine is here and I'm here and we are here, right, Delphine? Correct. So see you guys soon. So guys, we just met Leticia. And Leticia is an infirmier. Infirmier. And infirmier is actually nurse. So Leticia is a nurse and in the hospital in Orléans.
and I met her in the party of this motherfucker guy is going at the back. Laetitia pas parle beaucoup d'anglais. She don't speak a lot of English. Mais on a essayé, on parlait français. Ok? Et demain tu pas travailler? Oui, Tu travailles? je reprends le travail. Oui. Mais c'est la week-end demain. Bah oui, mais moi je travaille un week-end sur deux. Okay. So she's working tomorrow. Tomorrow is a weekend, but she works on the weekend because she's a nurse. Okay. So she takes care of old people. Old people. So she don't know because old people are old. And but yes, we will. It's nice to meet her, Laetitia, and then we will keep meeting Laetitia encore. On va rencontrer encore. Ça toi. Oui. So on va dire salut au Laetitia. तो गाइज़ ये था ओर्लियों शहर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शहर, उसकी कहानी और ये सुंदर आर्किटेक्चर, बिल्डिंग और ये हमारी प्यारी नदी पसंद आई होगी। और तब तक अगले हफ्ते के लिए कुछ ना कुछ और जगह देखते हैं कहाँ आपको लेकर चलें और दिखाएं और कुछ नया बताएं। तो अपना ध्यान रखिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, नमस्ते, बाय।